Good morning, all of you. Today we'll discuss the toroids of class 12 physics. What do you mean by the toroids? What do you mean by toroids? Toroids basically is a hollow circular ring. Is a hollow circular ring on which a large number of turn of insulated मेटेलिक वायर्स आर क्लोजली बाउंड। टोरॉइड क्या है? एक होलो सर्कुलर रिंग है। इस होलो सर्कुलर रिंग पर क्या किया गया है? एक इंसुलेटेड मेटेलिक वायर लिया गया है जिसको क्लोजली बाउंड किया गया है, और इसमें करंट फ्लो किया गया है आई करंट फ्लो हुआ है इस टोरॉइड के अंदर। नाउ यू विल फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at the point P of the free space, and at the outside the toroids या circular rings at the point Q, and inside the toroid point S. Now this diagram is also calculated by separately. Now this diagram, let this dotted line is also passing through the point P is called first loop is first ampere loop, and now second dotted line is also passing या cut the point S is called second ampere loop, and last third dotted line also cut the point Q is also called third Amperian loop. Third Amperian loops, radius of the first loop is R1, radius of the second loop is R2, and third loop is R3. Now you will find the magnetic field at the free space inside the toroid and outside the toroids. What is the value of the magnetic field inside the toroid, outside the toroid, and free space of the toroids? Now you can calculate the value of magnetic field using the ampere loops. This is plus mark, this is the plus signs, this is the minus signs. These also directions of the current represented. Current is also, this is negative to positive, in negative to positive. The plus sign is also represent the, this is so right hand rules. If current is also along the direction of thumb, the finger, curl the finger is also represent the magnetic fields. If current is also inverse, is positive, and thumb is also outward, या current is outward is also negative. This तरीका से outward is negative, curl and thumb is outward, current direction is negative, thumb is inverse, current direction is positive. Now magnetic field due to toroids. Now we will find the magnetic field with toroids. First point, magnetic field at point P. तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे क्या होगी? जो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? नाउ यूजिंग द एम्पियर लॉ, दिस इज एम्पियर लॉ इज B vector dot dl vectors is equal to mu naught I inside, where inside this ampere loop first the value of current is zero, I inside the loop is 0, then B vector dot dl vector is equal to mu naught into 0, it means B equal to 0, and magnetic field also 0. Inside the loop current is 0, then magnetic field also 0 at the point P. Now second point, you will find the magnetic field at the point Q. इस पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी?
आप ऑलरेडी जानते हो जो पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट क्यू का जो एम्पीरियल लूप है ये क्या कर रहा है, अपने अंदर करंट को क्लोज कर रहा है, तो इसका मतलब करंट है ऑलरेडी, बट करंट इनसाइड द क्यू या थर्ड लूप इज आल्सो जीरो। इट मींस जीरो कैसे है, सामने समझिए। आई करंट इनसाइड द दिस सर्कुलर रिंग्स, करंट दिस डायरेक्शंस इनवर्स, इनवर्स करंट ऐसे जा रहा है, करंट इनवर्स है, प्लस साइन होगा करंट का तो इनवर्स होगा, आउटर साइन क्या होगा, माइनस होगा, तो करंट इनवर्स है, तो इसका मीन जितना करंट इंटर कर रहा है उतना क्या लीव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ। नाउ डिस्कस इन द लास्ट वीडियो एम्पियर लूप इन नेट करंट आई माइनस आई इक्वल टू जीरो, तो इट मीन्स दिस थर्ड लूप मीन्स पॉइंट क्यू इज आल्सो इनक्लोज द करंट इज जीरो, point q is also includes the current is zero, it means magnetic field also zero, it means magnetic field also zero। देखिए करंट क्या हो रहा है, इधर जा रहा है ऐसे, इस लूप में इधर गया अंदर की तरफ, तो जो नेट करंट क्या होता है आप लोग जानते हो, फ्रॉम एम्पियर लूप से आई माइनस आई क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि करंट की वैल्यू इस इंसुलेटेड कॉपर वायर्स में, जो इंसुलेटेड मेटेलिक वायर है उसमें क्या है, सेम है, आई एंटर कर रहा है, आई क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ करंट इज zero, value of current is zero। Then using the ampere loop, ampere law, B vector dot dl vector equal to mu naught I outside, I outside या outside पॉइंट के लिए करंट इनसाइड, पॉइंट जो Q है वो आउटसाइड है, तो mu naught I inside, always I inside equal to zero, that means म्यू नॉट इंटू में जीरो, आई इनसाइड क्या है, जीरो है, देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो जीरो, दिस इज द बी इज आल्सो जीरो, देन बी इज आल्सो जीरो। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। नाउ डिस्कस द लास्ट पॉइंट एट द पॉइंट एस। Now calculate the magnetic field. Calculate the magnetic field at the point S. Point S. You will find the magnetic field at the point S. This point will find the magnetic field. Now using the ampere loop, B vector dot dl vector is equal to mu naught I inside. Mu naught I inside. अब देखिए इस पॉइंट एस का जो नेम है सेकंड लूप है, इस सेकंड लूप के अंदर क्या इंक्लूज है, करंट इंक्लूज है, कैसा करंट इंक्लूज है, प्लस करंट इंक्लूज है, प्लस माने जो करंट की जो डायरेक्शन वो क्या इनवर्स है, इस तरीके से करंट है इनवर्स, तो मैग्नेटिक दिस, मैग्नेटिक दिस, ऐसे ही मैग्नेटिक दिस, मैग्नेटिक दिस, मैग्नेटिक दिस एंड मैग्नेटिक दिस, दिस magnetic current inward means current is positive, magnetic field is, this is clockwise direction sir, and magnetic field is also tangentially this loop, magnetic field also tangentially this loop, this direction of current magnetic field 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 this, so it means magnetic field lines is tangentially at the point S, and this is also move along the ampere loops along point 2, along point 2। अगर इस तरीके से होता राइट हैंड रूल, करंट दिस डायरेक्शन, magnetic field this direction एंटी क्लॉकवाइज, करंट दिस magnetic field this direction एंटी क्लॉकवाइज, तो you will find the magnetic field at the point S, B vector dot dl vector equal to mu naught I inside। If there are number of turns is n, तो current is ni, total current is ni, B vector dl cos 0, क्योंकि B और dl in the line the same direction, cos 0 mu naught ni, this is mu naught ni, B dl cos 0 is 1, B is taken out from integral, dl equal to mu naught ni, dl is the length of the circle या circumference of the circle, it means b into में 2 pi r
सपोज R मान लीजिए या R2 मान लीजिए, 2 पाई R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई, वेयर B इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई R2। इट मीन्स वेयर, इसके बाद वेयर एन इक्वल टू क्या आता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है। तो इट मीन्स बी क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोराइड्स, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टोराइड इज आल्सो इक्विवेलेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनाइड्स। तो या टोराइड इज आल्सो, इट इज फॉर्म ऑफ ए सोलेनाइड इन सर्कुलर कॉइलिंग्स। ये जो टोराइड है फॉर्म होता है किसका, सोलेनाइड का, लेकिन ये किसके रूप में बिहेव काम करता है, एक सर्कुलर कॉइल के रूप में काम करता है। दिस इज द टोराइड। टोराइड क्या है, बेसिकली इट इज ए होलो सर्कुलर रिंग। ये एक होलो सर्कुलर रिंग होता है जिस पर लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड टर्न होती है, किसकी, मेटालिक वायर की, जो कैसी होती है, क्लोजली बाउंड होती है। क्या होती है, क्लोजली बाउंड होती है। नाउ यू विल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द फ्री स्पेस ऑफ द पॉइंट P inside the toroid and point Q outside the toroid and point S inside the metallic binding of the insulated wires, S point. Now the value of the magnetic field at the point P0 Q0, but magnetic field at the point S is B equal to mu naught and I. Small n is the number of turn pipe length, I is the total current passing through the toroids. Please note down this pointed in the notebooks, and thank you for watching this video. Please subscribe the channel, press the bell icon.